Class Class 10th Statics Exercise 14.1 Chapter 14 Question number 4 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women, choosing a suitable method. Number of heartbeat per minute 65 to 68. Number of women 2, 68 to 71. Number of women 4, 71 to 74. Number of women 3, 74 to 77. Number of women 8, 77 to 78, 77 to 80. Number of women 7, 80 to 83. Number of women 4, 83 to 86. Number of women 2. So we calculate the here mean. So number of heart here, number of heartbeat per minute and here number of women's number of women here the mid value of xi and here ui is equal to xi minus a oblique h and final fi ui. So number of heartbeat given 65 to 68 and 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77 and 77 to 80 or 80 to 83, 83 to 86, 86. Here number of women is given here 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2. Mid value is that 65 and 68 is 133. So half is 66.5. 68 and 71 plus क्या half value is 69.5 and 71 and 74 plus क्या half value is 72.5 and 74 and 77 plus क्या half value is 75.5 and 77 plus 80 is half value is 78
76.5 and 80 and 83 प्लस क्या हाफ वैल्यू इज 81.5 and 83 plus 86 half value is 84.5. So here we find ui 66. Here a is our 3 and 3, so a value our 75.5. so 75.5 and 66.5 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस में जो वैल्यू आएगी 66 एंड 66 में से 75 में से आपने माइनस किया 66.5 को, तो आपकी जो वैल्यूज़ आ रही है 75.5 माइनस 66.5, सो 0 15 में से और आपका 699. So here value is comes -3. Here value is 69 minus 75, 6 minus 2. Here minus 1. Here 0. Here 1, 2 and 3. Here mean value is a is equal to 75.5. h क्लास मार्क जो है 78, 79 और 90 और 71. तो क्लास मार्क हमारा 3. So here summation of fi is equal to 4 to 6, 7, 8, 9, 9 और 8, 9, 8, 17, 17 और 4, 21, 28, 29, 30. So 30. And here 2 3s are FIUI, 2 3s are 6, 4 2s are 8, 3 1s are 3, 8 0 0, 7 1s are 7, 4 2s are 8 and 2 3s are 6. So summation FIUI is equal to here 8 6 14 and 14 और 3 17 minus 17 और 7 8 15 और 6 21. So our answer is 4. So we solve it. Here summation FIUI is equal to 4. Here mean कैलकुलेशन करेंगे. मीन स्टेप डेविएशन मेथड यूज. So mean is that a plus FIUI upon में FI summation into में H. Here A is 75.5 and summation FIUI plus 4 summation FIUI 30 and H is equal to 3. Here 75.5 एंड 3 से हम इसे कैंसिल कर देते हैं. 3 से कैंसिल करते हैं
तो 3 1 जा 4/30, 3 1 जा 3, 3 से 10. So here answer is 75.5 plus 0.4. So answer is 75.9. Hence heartbeat per minute is 75.9. 75.9. सो क्वेश्चन को हमने समझा. क्वेश्चन नंबर 4, ये नंबर ऑफ हार्ट बीट जो हमारे को गिवन था 765 to 68 में 2 वुमेंस थी. हमने इसमें मीन वैल्यू निकाली, आइडेंटिटी क्या एज ए आवर 75.5. सो हमने यहाँ पर यू आई निकाला जो कि बहुत इजी है. हेयर यू आई फाइंड किया हमने, विच इज़ एक्स आई इज़ एग्जाम्पल 66.5 माइनस 75.5 ऑब्लिक डिवाइड बाई 3 जो कि हमारा आया था -9 बाई डिवाइड 3 3 सा 9 -3. इसी प्रकार हमने -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो -6 -8 -3 और 7 8 6. इसके बाद हमने आइडेंटिटी किया, ए 75.5, एच इज़ 3, एफ आई यू आई 4. स्टेप डेविएशन मेथड का हमने यूज्ड. सो एफ आई यू आई इज़ 4, एफ आई 30 डिवाइड किया 10 and 75.5 0.4. Hence heart beat per minute is 75.9. This is our answer. Okay, question number 5 करते हैं. Here question number 5. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing box. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution mangoes according to the number of boxes. Number of mangoes 52 to 52. 50 से 52 में 15 है. नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस जो 52 52 15 एंड 53 so 55 is 110, 56 to 58 135, 59 to 61 is 115 and 62 to 64 is 25. There are number of boxes given below and number of mangoes given upper. To find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? Here solution is daily expenditure, number of mangoes,
number of mangoes. Here number of boxes. Here mid value of xi. So here number of mangoes is 50 to 52, and 53 to 55, and 56 to 58, and 59 to 61, and 62 to 64. Here number of boxes is 15, 110, 135, 115, and 25. Mid value is that 50 and 52 is 51, 55 and 53 is 108 का हाफ किया हमने 54, and 58 and 56, so हाफ किया हमने तो 57, and 61 and 120 हाफ किया तो 60, and 64 and 62 प्लस किया हाफ किया तो हमारी वैल्यू आई 63. दिस इज मिड वैल्यू. So our A, this is A, so we calculate here ui is equal to xi minus A oblique में h. So here A 57 में से 51 गया तो 6 minus 6, and differences is here A our 57 and xi 51, 54, 57, 50, 60 and 63, and h is 2. H our class mark is 2. So here 3 minus 3, here 54 minus 2, 54 minus 57, 3, 1.5, 1.5, and 57 minus 57 is 0, 60 minus 57, 3, so plus 1.5, and 63 minus 57, 6, so 3, 6, so this is 2, 3, 2 3s are 6, 3, 57, 63 minus 57, 6, and divided by 2, 3. So here FIUI (15 3s are 45) and 110 multiply 1.5. So answer is minus 1.165, and 135 0 0, and 115 multiply 1.5 is 115 multiply 1.5 is 172
0.5 and 53, 25 3 is 75. So our addition FIUI is equal to 5, 15, 20, 0, 2 to 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 0, 10, 0 and 3, 1, 4, 400 or summation FIUI is equal to, here calculation is there, 5, 5, 10, 0 and 5, 6, 11, 1, 2, 210 minus, and here 172 plus 5 is equal to 5.5, here 0.5 and 5 to 7, 7, 7, 14, 2. So here 5, 7, 3. Our answer is plus 37.5. So summation FIUI is 37.5. So here we use the formula step deviation method. Mid value, here A plus summation FIUI upon summation FI multiply H. So here A is our 57 plus FIUI is 37.5 summation FIUI 400 and H our ये डिफरेंसेस है हमारा 2, H is 2. So here we solve it. Here the calculation is that 57 multiply 37, here 2 से हमने डिवाइड किया, 57 प्लस 37.5 एंड 2 से हमने डिवाइड किया, सो 2 1 जा 2, 200, 200. So answer is that 57 plus 0.1875. So complete answer is that mean is 57.1875. This is a find the mean. The mango kept in packing box. The method finding mean. The mean is 57.1875. This is a final answer. So हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से समझा. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 is that here question number 6, the table below shows the daily expenditure on food of 25
household in a locality, daily expenditure in rupees, number of households 100 to 150, number of household is 4, 150 to 200, number of households is 5, 200 to 250, number of households 12, 250 to 300, number of households 2, 300 to 350, number of households 2. To find the mean daily expenditure on food by suitable method. Here यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, जिसके अंदर जो है टेबल दिया गया एक्सपेंडिचर, जो हमारे खर्चे हैं 25 घरों के खर्चे बनाए गए हैं। 100 से 150 रुपये खर्च करने वाले फैमिली, जो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स हैं वो 4 हैं, और 150 टू 200 में नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड जो है 5 हैं। 200 से 250 में 12, 250 टू 300 में 2 एंड 300 टू 350 में 2। तो हम इन सब का मीन डेली एक्सपेंडिचर्स को फाइंड आउट करते हैं। सो वी राइट डेली एक्सपेंडिचर हियर गिवन डेली एक्सपेंडिचर daily just in rupees 100 to 150, daily expenditure 100 to 150 is 4, and 150 to 200 is number of household, is 100 to 150 is 4, 150 to 200 is 5, and 200 to 250 is equal to 12, and 250 to 300 is 2, and 300 to 350 2. There number of holes given, table given below shows the expenditure of food 25 houses hold locality. एक्सपेंडिचर 100 टू 150 रुपीज़ को खर्च करने के लिए 4 फैमिली है, 150 टू 200 को 5 फैमिलीज़ हैं, 200 5 फैमिलीज़ हैं, 200 टू 50 खर्च करने वाली फैमिलीज़ में 12 हैं, एंड 250 टू 300 में 2 मेंबर्स हैं, 300 टू 350 में 2 मेंबर्स हैं। सो वी फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ XI, मिड वैल्यू XI 100 and 150 half is 125, and 203 350 175, and 200 and plus 250 mid value is 225, and 300 to 550 half is 275, and 303 650
So half is 325. So mid value is A 225. Here A is equal to 225 and summation Fi 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 1, 1, 2. There are 25 and FIUI here A is 225 and H differences is 50 and here 225 H UI is equal to XI minus A oblique H. So XI is 125 minus 225. So 100 and 225 100. So divide by 50 minus 2 175 minus 225. So 50 minus 50, so minus 1 0 and 275 minus 250 1 and 325 is 2. So FIUI 4 to the 8 minus 8 and 5 1 is 5 minus 5, 12 0 0, 2 1 is 2, 2 2 is 4. So final summation FIUI is equal to 4 to 6, 8 5 13, 13 8 5 13 minus 6 minus 7. So here step division method used. X bar A plus summation Fi Ui upon my summation Fi into my H. Here A is 225, FIUI is minus 7 and Fi is 25, H is 50. So 225 25 minus 7 25 into my 50. So 25 1 is 25, 25 2 is 50, 7 2 is 14. So here 2 1 1. तो मी डेली एक्सपेंडिचर on food is 211 rupees. Repeat question. A is 25, H is 50, U is equal to XI minus A upon H. स्टेप डिविजन मेथड यूज किया हमने. 25 से 50 को डिवाइड किया, 2 आया, 7 2 14, 225 में से 14 माइनस किया, 211. डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड mean daily expenditure on food is 2 rupees
211। सो इसको हमने समझा। थैंक यू।